Hello friends, in this lecture we'll see what are the approaches for cost efforts. So many times this question has been asked in the examination. So there are different approaches: expert opinion, analogy, decomposition, models, top down approach and bottom up approach. So there are 6 approaches for cost estimation model. So first of all we will see expert opinion. The name itself suggests that the developer's expert opinion is to be taken into the efforts estimation. So expert opinion takes advantage of nature developer's personal experience. So that's I already told that the expert, that means developers personal experience जो होता है वो expert opinion में participate करेगा and due to that we can gain something in the cost estimation. To use this technique, the developer or manager describe the parameter of the project to be undertaken and expert make prediction based on their past experience. The expert may in fact use tools, models or other methods to generate the estimate, but these supporting techniques are not made visible to the requesters. Instead, the strength of the estimate relies on the quality of the experts and their breadth of the experience. So, in cost estimation, always expert opinion has been taken because that expert has his personal experience, and from that personal experience he may predict some good values, and at that time he may use some tools and models and other methods to generate that estimate. So this is very first approach. Second approach is analogy. Analogy is a formal, more visible approach to expert opinion. Here the estimators compare the proposed project with one or more past project. They try to identify particular similarities and differences. Then differences are used to adjust the actual efforts value for the past project based on the differences from the current one. This technique forces the estimation to describe the project in terms of key characteristics. So analogy is nothing but the relativeness. Analogy is nothing but the relativeness, or how much similar is the product is. So in analogy we have to compare the product which is our past product and the current product. We have to compare two products, the past product and the current product, and then what is the effort, what type of efforts the developers have taken in the past project, and from that experience the new product or current estimation has to be calculated. So that is about analogy. So that's why analogy is one of the approach for cost estimation. Decomposition. Decomposition is more formal still in that it involves more through analysis of the project characteristics that affect cost. The analysis is focused either on the product to be delivered or on the task required to build the software. In the first case, the software is described in terms of smallest component and then estimates are made for the efforts required to produce each component. And in second case, the activities are decomposed into low level tasks and effort estimates are made for each of these. Low level estimates are usually based on the average case or on some measure of product or task complexity based on past experience. So decomposition, आपको पता है डिकम्पोजिशन इसका मतलब आपको डिकम्पोज करना है, इसका मतलब पार्ट में डिवाइड करना है. सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं. सो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की एस्टिमेशन निकालना है तो जो प्रोडक्ट है आपका उसको हम अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और हर कंपोनेंट के लिए कितना एफर्ट लगेगा, एंड देन वी कंबाइन ऑल द एफर्ट्स एंड फ्रॉम दैट combination we can calculate the cost estimation. Another approach is what? In the second case what we have seen, low level जो activities है या जो functionalities है that can be decomposed into low level task, and from that low level task individual efforts कितना ले रहा है हर task के लिए, उसके हिसाब से उसका estimation निकाला जाएगा. So that is all about decomposition. Then models, that is one of the approaches. Models. Model of efforts are techniques that identify key contributors to the effort, generating mathematical formulae that relate these items to effort. Size is often a major determinant of effort.
but many models include other input variables such as experience of developers, implementation language, degree of reuse, and so on. These models are usually based on past experiences and their input values may require some decomposition. So model and efforts. Models of effort techniques identify key contributors in the efforts, generating mathematical formula that relate to atoms to the effort. Size is the major component जो जिस अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉस्ट एस्टिमेट करना है तो सॉफ्टवेयर की साइज़ के हिसाब से उसका कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाता है. सो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट major determinant is the size of the product or how much code you have written, so that is the major component. But many models include another input variables also such as experience of the developers, implementation language, degree of reuse and so on. तो साइज़ के अलावा भी दूसरे कुछ पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से हम कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं. वो है आपका एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलपर्स, बिकॉज जितना आपके डेवलपर्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा है उतना उनके एफर्ट ज़्यादा रहते हैं और एफर्ट्स अगर ज़्यादा है तो वी हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन देम. इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज वी आर यूजिंग, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो वी हैव टू पे, एंड अदर इनपुट में रिक्वायर सम डिकम्पोजिशन. So this is all about models. Another approach, last two approaches are bottom up and top down. Bottom up estimation begins with the lowest level parts of the product or task and provide estimates for each. Bottom up means what? It starts from lowest level of the parts. जो आप modularity जिसको बोलते हैं, आपका जो product है वो modules में convert किया जाएगा और हर प्रोडक्ट से फिर स्टार्ट होगा, जो हर मॉड्यूल से स्टार्ट होगा. छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स लोअर लेवल पे आ जाते हैं उनके एस्टिमेशन से स्टार्ट करके फिर हमें आपका पूरा पूरा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं. और उसका अपोजिट है टॉप डाउन एस्टिमेशन. टॉप डाउन एस्टिमेशन क्या होगा? इट बिगिंस विद द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट. Estimation begins with the overall process or product. A full estimation is made and then estimates for the components are to be calculated. इसका मतलब ये है कि टॉप डाउन में क्या होता है कि पूरा प्रोडक्ट का आपको पता है कि हमें इतने हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के लिए इतने पैसे मुझे इन्वेस्ट करने हैं या इतनी अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करनी है. सो आई हैव द टारगेट, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ आई हैव. Now I have to divide that 10 lakh rupees. That is the top down approach. And while in bottom up what is happening, जो मॉड्यूल्स है सिंपल छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो है वो मॉड्यूल्स के लिए कितना खर्चा लगेगा, फिर धीरे 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 जो मॉड्यूल्स बना के हर मॉड्यूल के लिए जो खर्चे लगेंगे उसको कंबाइन करके फिर हम पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने वाले हैं. ये हो गया बॉटम अप. और टॉप डाउन में क्या है, आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है या इतना खर्चा मुझे लगने वाला है, तो वो जो टोटल एस्टिमेशन है उसको डिवाइड किया जाएगा. और बॉटम अप में उसका अपोजिट स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई होगा. सो दीज आर दी अप्रोचेस फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग.